Continuing from the previous video, in the saliva there is an enzyme known as amylase. As because it is present in the saliva, it is called salivary amylase. The other name of it is ptyalin. P is silent like pneumonia. Okay, and the other enzyme that is present is lysozyme, not lysosome. Lysosome is a cell organelle. Another enzyme that is present is lysozyme. Lysozyme. Lysozyme, amylase and lysozyme. What is the function of amylase? नाम सुन के लग रहा है. तूने क्या बोला था? स्टार्च का दो फॉर्म क्या बोला था तूने? एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन. तो इसका मतलब ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. नाम है एमाइलेज. किसको ब्रेक डाउन करता है? ब्रेक्स डाउन starch. But the irony is not completely all the starch that you have taken in is broken down in the saliva. In the mouth. Why? That is because of you only. Because you don't spend enough time chewing. This is the reason why mothers say that ভালো করে চিবিয়ে খাও, अच्छे से chew करके খাও. বলে না? বলতো না ছোটবেলায় ভালো করে চেবো 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 ভালো করে চেবো. হ্যাঁ, ভালো করে চেবোতে কেন বলে? দ্য রিজন ইজ, মাকে জিজ্ঞেস করবি, এবার মা ভালো করে চেবোতে তো বলো, কেন বলো? সায়েন্স শেখাবে মাকে, ঠিক আছে? ওয়াই ডু ইউ সে? বিকজ দ্য মোর ইউ চিউ, the more the salivary amylase will get time to act on the starch and break it down, and your digestion will be more efficient. Is this clear to you? What is the work of lysozyme? Sometimes some bacteria enters with food. Right or wrong? Lysozyme is the enzyme which destroys cell wall of bacteria, means eventually kills it. So this acts as a anti-infection, যাতে তোর ইনফেকশন না হয়. ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? স্যার গোটা ব্যাকটেরিয়াটাকে ডিস্ট্রয় করে, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ডিস্ট্রয় করলে আর কি থাকবে? ব্যাকটেরিয়া প্যাত করে ফেটে বেরিয়ে আসবে. কি করে ফেটে বেরোবে? প্যাত করে ফেটে যাবে. কেন শেষ. সেল ওয়ালই তো নষ্ট করে দিচ্ছে, ওর মরে যাবে তো. ঠিক আছে? তো ব্যাকটেরিয়া এনজাইম হুইচ ডিস্ট্রয়স দ্য সেল ওয়াল অফ ব্যাকটেরিয়া. ওকে, লাইসোজাইম ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সালাইভা. রিমেম্বার ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়াল কি হয়? Another bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Okay. Lysozyme is the enzyme which destroys the cell wall of bacteria. So it's and acts as a kind of preventing you from infection. মানে স্যার প্লাজমা মেমব্রেন হয় না? হ্যাঁ হয়. প্লাজমা মেমব্রেনটা হচ্ছে পেপটিডোগ্লাইকান। না, এটা ব্যাকটেরিয়া. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. उसके बाहर सेल वॉल रहता है, प्लांट जैसा. अब तुम बोलोगे कि सर सेल वॉल तोड़ दिया, सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं, फिर भी बैक्टीरिया इसलिए मर जाएगा क्योंकि अंदर में इतना पानी घुसेगा कि बैक्टीरिया को फटा देगा. सेल वॉल होने से उसको रोक सकता था. हुआ अभी तेरे मतलब और कितना डेप्थ में पड़ेगा बोल? इसके भी डेप्थ में जाना है? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊँ अभी बैठ के? सुनो, ये बोलता है चलो साइड से, तो इसके जैसा बनता जा रहा है अभी. एग्जाम देना है कि नहीं? अच्छा, তুই কি করতেছিস ইঁদুর? এদিকে দেখ. Another thing that saliva does, saliva waters the food. Sir, why this watering of food or making the food makes the food moist? The food moist. Sir, why is it so that making the food moist is important? Because after mouth, the food will pass through esophagus. O is silent. When it will pass through esophagus, the esophagus का lining मतलब अंदर का जो cells, ये esophagus का कैनल है जिसमें से फूड पास होगा. अंदर का जो लाइनिंग है, जो सेल्स है, वो बहुत सॉफ्ट होता है. तो हार्श फूड जाएगा तो लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए वाटरिंग ऑफ द और मेकिंग द फूड मॉइस्ट इज इम्पॉर्टेंट. इज दिस क्लियर टू यू? सो दैट स्मूथ पैसेज ऑफ फूड ऑकर्स. सो दैट smooth passage of food occurs. Is this clear to you? Huh?
Okay, now so what is अगर तुमको यहाँ से क्वेश्चन करे कि which component of food gets digested in the mouth, क्या बोलोगे? Which component of food gets digested in the mouth or starts getting digested in the mouth? Starch. Due to which enzyme? Digestive. Tialin or salivary amylase. What are the functions of saliva? Number one function, tialin. Produces tialin which starts the digestion of the starch. Number two function, produces lysozyme which breaks down the cell wall of bacteria and saves us from infection to some extent. Okay, and also waters the food and makes the food moist so that there is a smooth passage of food through the This esophagus. is also done by lysozyme. This is the watering of the food. Saliva water जैसा है ना. So that smooth passaging of the water food is done. Is this clear to you? Understood? Okay. What is the function of tongue? Mixing of the proper. Tasting the food. Speaking. Yes. What is the function of tongue in digestion? चलो क्वेश्चन को चेंज करता हूँ. ठीक है से टेस्टिंग द फूड. हाँ क्यों? क्योंकि टेस्ट बड्स रहते हैं ना. तुम लोगों को पता है ये जो गुटखा कुमार है ना सारे गुटखा खाते हैं जो गुटखा कुमार, ठीक है, उन लोगों का टेस्ट बड डिस्ट्रॉय हो जाता है. सिगरेट से भी टेस्ट बड डिस्ट्रॉय होता है लेकिन धीरे धीरे. ठीक है, गुटखा से टेस्ट गुटखा पान ये सब जो खाते हैं ना उन लोगों का टेस्ट बड्स डिस्ट्रॉयड होता है. उन लोगों को खाने का असली टेस्ट नहीं मिलता. उन लोगों को लगता है कि टेस्ट मिल रहा है लेकिन जो वो असली टेस्ट नहीं है. इज दिस क्लियर टू यू? Sir, you get it. शट अप. चुप. डोंट स्पीक मच. अब मैं बोलने मना कर रहा हूँ, लोग सोचेंगे मैं गुटखा कुमार हूँ. गुटखा खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. कैसा छपरी जैसा लगता है. छपरी भी नहीं, कैसा लगता है. छी यू. एनीवे, टंग का काम है टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा. हाँ, टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द फूड, मूव अराउंड एंड स्वालो. ये स्वालो करने में भी हेल्प करता है. टंग से पीछे धकेल देते हो. टू मूव द फूड विथ सलाइवा, टू मिक्स द फूड विथ द सलाइवा बाय मूविंग द फूड इन द माउथ. राइट और रॉन्ग? इन द माउथ. बोलो तो टंग किससे बना हुआ होता है? मसल्स, है ना. मसल्स से, मस्कुलर टंग मसल्स से बना हुआ होता है. So which muscle? अरे बाप रे. वॉलंटरी मसल्स. Voluntary muscles means Movable muscle. voluntary muscle means what? Striated, unstriated. Striated muscles. So striated माने? 9 में भर्ती हो जाके. दो तरीके का मसल्स होता है, स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड मसल्स होता है. So भूल गया. अनस्ट्रिएटेड आर इनवॉलंटरी मसल्स, स्ट्रिएटेड आर वॉलंटरी मसल्स जनरली. Striated से movable है. Striated are movable by your own wish, and involuntary muscles are unstriated muscles. अरे भाई, मसल सेल्स जब 11 में पढ़ोगे तब मसल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तब देख लेना. मसल्स में ऐसे मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन दो तरीके का प्रोटीन रहता है. एक्टिन और मायोसिन दो तरीके का प्रोटीन रहता है. ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइम नहीं है. ठीक है, और ऐसे स्ट्रियासन्स क्रिएट कर देगा ज़्यादा जम के. ठीक है, तो वो वॉलेंट्री मसल है, मतलब अपने मर्जी से मूव कर सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो इनवॉलेंट्री मसल्स है उसमें स्ट्रियाशंस नहीं रहता है. नॉर्मल मसल्स है वो इनवॉलेंट्रीली, मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. अभी आएगा, जैसे स्टोमक में होता है. स्टोमक इज ऑल्सो मस्कुलर, नो? अच्छा, उसके स्टोमक से पहले क्या? माउथ के बाद क्या? माउथ के बाद ईसोफेगस. माउथ के बाद क्या होगा? ईसोफेगस से पास होगा. इट विल पास थ्रू द ईसोफेगस.
इसोफेगस से जो पास होगा, রোকো করি এবার দেখ ইসোফেগাস, ঠিক আছে? এবার ইসোফেগাসটা হচ্ছে, বলতে পারিস যে ইসোফেগাসটা কি। এবার ইসোফেগাসটা হচ্ছে যে একটা ক্যানেলের মতো থাকে, ঠিক আছে? স্যার কি দিয়ে তৈরি? আবার মাসেলস দিয়ে তৈরি। স্যার কি মাসেলস দিয়ে তৈরি? ভলেন্টারি না ইনভলেন্টারি? এইবার ইনভলেন্টারি মাসেলস দিয়ে তৈরি। ইনভলেন্টারি মানে কন্ট্রোল করতে পারবি না। কি হয়, ফুড যখন ঢোকে এই মাসেলগুলো কন্ট্রাক্টটা রিল্যাক্স করে একটা ওয়েভ লাইক মোশন ক্রিয়েট করে মাস্কুলার, যেই মোশনটাকে বলে হচ্ছে পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। ফর দিস পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট দ্য ফুড গোজ ডাউন ইনটু দ্য স্টমাক। হ্যাঁ, যখন when you will swallow, after that it will occur. Second, the gravity. What basically happens is that when your mouth is there, I am very good in drawing, don't laugh. Suppose this is your mouth. আরে হা করা আঁকছি। Now this is the mouth. Now from here esophagus is coming down. Now here, when esophagus is coming down, from your nose also trachea will come down. Are you getting my point? Now here it becomes common, after that it separates out again. Now here one flap is there. The flap is known as epiglottis. The flap is known as what? Epiglottis. The epiglottis closes the trachea so that food doesn't enter in your windpipe or trachea. Trachea carries wind, no? That is the reason why they say don't talk while eating. Because if you start talking, then your epiglottis will start functioning. It will not be efficient enough to close the trachea and food particle may enter inside your trachea. Is this clear to you? That video dekhe nish. Is this clear to you? Anyway, food enters and a peristaltic movement occurs. Peristaltic movement is a wave of constrictions. Contraction, relaxation, wave of constriction occur. This is also known as food pipe. Is this clear to you? The food pipe, understood? The lining of the food pipe is very smooth, so the food requires to be smooth also. That is why saliva waters the food. Understood? Now what basically happens is that you will be having this thing, you will be the food will go into the stomach. Stomach is a large muscular bag. Stomach is a large muscular bag. It is made up of muscles. It's a large muscular bag. Are you getting my point? When food enters in the stomach, it expands a little bit to get the food in. Okay, there is a flap-like structure on the opening of the stomach with the food pipe, which is known as sphincter. Sphincter. This sphincter is a two-way sphincter. Two-way sphincter means it opens downwards also, and if pressurized from here, it opens upwards also. Are you getting my point? If the stomach feels that there is any kind of unwanted substances that has entered, or any kind of stomach is filled with gas and something happens and you try to eat food, after some time what will happen? Due to the unwanted substance, stomach will produce certain substances, HCl gas and all, which will open the sphincter on the upward direction, and there will be anti-peristaltic movement, which is opposite of peristaltic movement, and you will vomit, which you can't control. Is this clear to you? Say so after swallowing also we can't control. Can we stop the food in the esophagus? না খেয়েছি esophagus অব্দি আটকে দেব।
You can control swallowing because tongue is voluntary. You can control tongue. But you cannot control the esophagus, neither you can control the stomach. Stomach acts as a muscular bag. It have a churning activity. Churning activity means, sir, it continuously, churns, goes in and out, contracts and relaxes and all, so that it can break down the food even more. And breaking down the food even more means increasing the surface area so that enzymes can act more. Is this clear to you? So stomach में कोई enzyme नहीं काम करता है? हाँ, करता है. Pepsin. But this pepsin inside the stomach remains as pepsinogen. The pepsinogen gets converted into pepsin, which can break down protein. Break down what? Protein. But not completely. Suppose the protein globular structure is there, so it breaks down and converts it into peptide chain. Peptide chain means, sir, that straight chain of amino acids with peptide bonds. And these peptide bonds are not broken down. The complex structure of the protein is broken down. That I taught earlier. Is this clear to you? Sir, peptide chain ke broken down kora সম্ভব না? Shambhav, later in the intestine. Stomach e? No, later in the intestine. Stomach only the complex structure of the protein is broken down and converted to peptide chain. Who does it? Pepsin does it. But pepsin is the active form. Pepsinogen is the inactive form. How does it get converted into pepsin? By the production of HCl from the lining of the stomach. The HCl mixed liquid that is produced from the stomach is known as gastric juice. In gastric juice, little bit of salt is also there. HCl is there. All these type things are there. Is this clear to you? So if they can ask you what is present in gastric juice, you say pepsinogen. In gastric juice, with the action of HCl, the pepsinogen gets converted into pepsin. Is this clear to you? Do you think that this acid has only one function? This HCl acid, only converting pepsinogen to pepsin? The bacteria which remained alive from the lysozyme of the saliva, they are also now killed dead by the action of the acid. Is this clear to you? So this is another function of the acid. And you can ask me one question. Sir, the stomach is there. There, I am so good in drawing, no? This is the stomach. Right or wrong? It looks like this, no? Oh no, this is liver. See. अब बना जाके. Now, So you can take two. gastric juice are produced from the stomach's lining. Are you getting my point? Here also sphincter is there. So gastric juice is present in the sides of the stomach. Achha, this sphincter is known as esophageal sphincter. Esophageal sphincter. Because it is the opening from the esophagus, no? And it is a two-way sphincter. A flapper moto. নিচেও খোলে উপরেও খোলে। ফুড হওয়ার সময় নিচে খোলে, বমি হওয়ার সময় উপরে খোলে। Is this clear to you? Sir, how the gastric juice is present? Gastric juice দেখ এখানে লাইনিং থাকে, অনেক সেলস থাকে, ঠিক আছে? স্যার এটা কিভাবে প্রেজেন্ট থাকে ওখানে? বলতেছি তো, এই সেলসগুলোর থেকে সিক্রিট হয়, প্রেজেন্ট থাকে না। These cells produce it when you eat food. Are you getting my point? The cells produce it when you eat food. But stomach lining, there is name, I forgot now. Okay. Now, the cells that are produced, the gastric juice that is produced has HCl. Why doesn't the HCl destroys the stomach lining itself? Because the lining is covered with mucus. Because the lining is covered with mucus. Mucus prevents the HCl gas or the HCl to destroy the stomach itself. Is this clear to you?
আচ্ছা, হোয়াট ইজ অ্যাসিডিটি? আমি এখনই জিজ্ঞাসা করতে নিয়েছিলাম এটা। Too much acid. হ্যাঁ, প্রোডাকশন অফ এক্সেসিভ অফ অ্যাসিড ইন দ্য স্টমাক ইজ নোন অ্যাজ অ্যাসিডিটি. Why can it be produced? It can be produced if you have empty stomach for long. It can be produced. It can be produced if you eat too much of fat, burnt trans fat. ठीक है, burnt trans fat if you eat, it can be produced. Is this So clear what is to you? bone transfer? Burnt fat, trans fat भूले जा, burnt fat, cooked fat. Okay, it can be produced. Is this clear to you? Understood? এটা ডিরেক্টলি যদি কেউ তেল হ্যাঁ, তাহলে অ্যাসিডিটি হওয়ার কথা। ডিরেক্টলি তেল খেয়ে নিলে বার্ন না হবে না অত ইয়ে, মানে ফ্যাট খেলে হবে। মাছ কাঁচা তেল খেয়ে নিলে কাঁচা তেল। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? তাহলে স্টমাক অব দি ক্লিয়ার। সো ইন দ্য নেক্সট ভিডিও উই উইল গো ইন টু দ্য intestine. From the stomach it goes into the intestine. Now the intestine that will start is small intestine actually. I'll tell you small intestine. But here is a sphincter. This is the আচ্ছা স্টমাককে পেপটিক বলে, জানিস তো? পেপটিক আলসার occurs where? In the stomach. Peptic. So this is a sphincter. There is another sphincter which is only one way sphincter. Are you getting my point? Because from intestine now it will not go back. That means we understand what we vomit from the stomach. Once you get into the intestine, it will never come back. Is this clear to you? Understand? This is the reason food poisoning hole যদি 3 ঘন্টার মধ্যে within 3 hours it is caught. Okay, the stomach says, then you will be saved. Why you know? Because the doctor will put machine inside and clean the food and wash your stomach. ইন্ডাস্ট্রি চলে যায়। তাহলে গেলি ব্লাডে মিশবে। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? আন্ডারস্টুড অর নট আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে কী বুঝলি? স্টমাকে খাওয়ার কতক্ষণ থাকে? 3 hours. স্টমাকে ফুড স্টেজ ফর 3 hours. Is this clear to you? So rest of the things we'll learn in next video.